अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कानून और आप। खालिद जलाल की तरफ से आपको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं मिस्टर बुखारी पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इस दौरान मैं मिस्टर बुखारी का एसोसिएट आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ और मैं आपकी इस प्रोग्राम में मावनत करूँगा। मिस्टर बुखारी पाकिस्तान में बहुत से मद्दाहों को और ऐसे लोगों को मिलने गए हुए हैं जिनको कानूनी मशावरत की ज़रूरत है। कुछ कानूनी अमूर में भी वो मसरूफ़ होंगे। इस दौरान आपकी कानूनी मशावरत के लिए और आपकी मदद के लिए जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ है वो जारी रहेगा और इस सिलसिले में आज आपके खिदमत में हाजिर है खालिद जलाल। मेरे साथ जो कानूनी मशीर, कानूनी माहिर मौजूद हैं वो हैं मिसेस बुखारी की रफ़ीक़-ए-कार मिसेस बेली पर्किंस, जो कि सीनियर सोलिसिटर हैं। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं आपसे उनका प्रॉपर फॉर्मल तारुफ करवाता चलूँ। मिसेस बेली पर्किंस, I have explained to them we are here to assist them as Mr. Bukhari's associates, and you are the legal experts we have on this show of ours. Okay, that's right. And I would like you to introduce yourself. Well, I am Mrs. Bailey Perkins. I'm an associate at Bukhari Chambers. I'm 13 years call, and we're wanting to give some information on immigration issues. We do have a start. Do you want to start? आज हम सबसे पहले तो आपकी उन ईमेल्स में से कुछ मुंतखब ईमेल्स लेंगे जो आप हमें वक्तन फ़वक्तन सेंड करते रहते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। सबसे पहले जो ईमेल हमारे पास मौजूद है वो है मिस्टर आमिर की तरफ से। मिस्टर आमिर का सवाल है 7 years पॉलिसी के बारे में जो अभी करंट नई पॉलिसी है। मिस्टर आमिर की आपका सवाल ये है कि आप का इमिग्रेशन हिस्ट्री के मुताबिक आप 2005 में एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आए थे। 2009 में आपने स्विच किया PSW पे, जो आपने लिखा तो नहीं है, अपेरेंटली एक्सपायर हो गया होगा 2011 में, बिकॉज 2 साल का होता है। 2011 के बाद आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री के जो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, आपका कोई इमिग्रेशन स्टेटस मुझे यहाँ पे नहीं ईमेल के मुताबिक नज़र आ रहा। अपेरेंटली उसके बाद आपने ओवरस्टे किया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन आपका ये है कि आपके 2 बच्चे हैं जो 6 साल और 2 साल की उम्र के हैं। अब इन 2 बच्चों की बुनियाद पे शायद आप लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अंडर द 7 years पॉलिसी, और आपका सवाल ये है कि आप अभी अप्लाई कर दें जबकि बड़ा बच्चा आपका 6 साल गुजार चुका है यूके में, या आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। सवाल के जवाब के लिए मैं मिसेस बेली पर्किंस से अभी मैं इसका जवाब लेता हूँ और आप उनसे डायरेक्ट सुन भी सकते हैं और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। Mrs. Perkins, this question is from Amir. He has been here in the UK since 2005 as a student, but in 2009 he switched to PSW, which apparently expired in 2011. We don't have confirmed information whether he extended or he switched to another category, but apparently he overstayed. But he has 2 children, 6 years and 2 years old respectively. His question is, should he apply for leave to remain under the 7 years policy now, or should he wait for another year to pass and make the application after the eldest child has completed 7 years in the UK? The answer to that would be that you'd have to wait for the year until his child has attained the age of 7. The reason is what information and circumstances are in place as of the date of the application. So once the child attains the age of 7, they can make an application on an FLRO application form, relying under 276 ADE of the immigration rules. Mr. Perkins, how much is the fee on this form? The fee per individual is 578, but clearly they'll have dependents. So there'll be an additional charge for each dependent. Right. And I would like to ask you, what if they make the application now? They still have 1 year, the elder child still has 1 year to go to complete the 7 years stay in the UK. Okay, well the application will be refused. As I've explained, the circumstances as of the date of the application will be that they don't qualify. The child would have only attained the age of 6
as opposed to 7. So as to avoid the additional costs and expense that it would entail in making the application sooner, it's a matter of just waiting until you actually qualify to then make the application. From another perspective, would it be good for them to keep one application outstanding in order to have something outstanding with the Home Office so that they are not labeled as illegal immigrants, and maybe they encounter UKBS, UK Border Agency at any point, and it might be helpful? Well, they're overstayers as it is at the moment. I can understand the opinion taken that they can make an application beforehand. However, it's knowing that the application will be refused. Capita at the moment are, as an enforcement unit, are very much clamping down on overstayers. So it is a situation of a possibility to make an application, but it will be refused. It's just knowing that. Thank you, Mrs. Perkins. No problem. जी आमिर, अभी आपने मिसेस पर्किन का ओपिनियन सुना. मैं थोड़ा सा इसको सादा लफ्ज़ों में दोबारा बयान कर दूँ. आप 7 इयर्स की पॉलिसी में आपका बच्चा जो है वो अभी क्वालिफाई नहीं करता, आप इसलिए आप एज अ फैमिली भी क्वालिफाई नहीं करते. तो मिसेस पर्किन की एडवाइस है कि उनकी एडवाइस ये है कि आप अभी 1 साल इंतज़ार करें, फिर एप्लीकेशन करें. अगर आपने अभी एप्लीकेशन की तो ये स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि बच्चे के अभी 7 साल यूके में कंप्लीट नहीं हुए. दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई कि अगर अभी एप्लीकेशन कर देते हैं तो इससे आपको एक आपकी आउटस्टैंडिंग होम ऑफिस में एप्लीकेशन होगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कवर तो मिल जाएगा कि आपको एज एन इलीगल इमिग्रेंट वो आपको ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन आउटस्टैंडिंग होगी. लेकिन ये एप्लीकेशन स्टिल रिफ्यूज़ हो जाएगी, और एप्लीकेशन उसी सूरत में इस कानून के अंदर देखी जाएगी जबकि आपके बच्चे ने एप्लीकेशन की डेट पर 7 इयर्स यूके में कंप्लीट कर लिए हों. एडिशनली मैंने उनसे ये भी पूछा कि फॉर्म कौन सा यूज़ किया जाएगा. उन्होंने बताया कि FLRO फॉर्म यूज़ होगा, और इसकी फ़ी जो है आप मेन एप्लीकेंट के लिए 578 है, और जितने आपके डिपेंडेंट हैं उनके लिए एडिशनल फ़ी होगी. थैंक यू मिसेस पर्किंस. शुड वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, fine. अगला सवाल है जी मिस्टर सिद्दीकी की तरफ से. शहबाज सिद्दीकी ने हमें ईमेल किया, और उनका सवाल डिस्क्रेशनरी लीव की पॉलिसी से रिलेटेड है. मिस्टर सिद्दीकी पूछना चाह रहे हैं कि अगर अपेरेंटली मिस्टर सिद्दीकी अपने 10 साल की बुनियाद पर अपना एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, तो इस सूरत हाल में कि जब अभी उनके 10 साल पूरे नहीं हुए और अपेरेंटली उनकी 10 अभी डिस्क्रेशनरी लीव चल रही है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या डिस्क्रेशनरी लीव जो है वो लॉफुल रेजिडेंस होती है, और सेकेंडली वो जानना चाहते हैं कि क्या ये लॉफुल रेजिडेंस जो है वो 10 इयर्स की जो लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन होती है वो अगर वो करें तो उस टुवर्ड्स दैट रिक्वायरमेंट ऑफ 10 इयर्स लॉफुल रेजिडेंस क्या वो ये काउंट होगी या नहीं. मिस्टर सिद्दीकी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. मैं अभी आपका क्वेश्चन जो है वो मिसेस पर्किंस के सामने रखता हूँ और उनसे हम जवाब लेते हैं. थैंक यू. मिस्टर पर्किंस, क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर सिद्दीकी. His question is related to discretionary leave policy. Apparently he is in the UK and wishes to complete 10 years of continuous legal residence in the UK. So his first question is, does discretionary leave come under lawful residence? The residence that he has been granted under the discretionary leave, does it count towards the requisite lawful residence? Yes, it does. Discretionary leave is lawful status in the UK. So if you have a combination of either discretionary leave and or leave as a student or in any other capacity, then that would constitute as lawful status in the UK. The issue raised as to the 10 years, with the 10-year lawful residence, there are going to be other requirements in order to get indefinite leave, not just 10 years lawful residence. So it's important that all of the requirements are satisfied in order to make the application. Mr. Perkins, at this point I would like to ask a supplementary question. What are the other main requirements, the key requirements for a settlement application?
on the basis of 10 years lawful residence in the UK? Okay, well, you'll have to do the English language test, which is now the English language and the UK life in the UK test. In addition to that, there's also concerns as to your character. You'd have to have a good character, i.e. no criminal convictions. If there are minor convictions, there are exceptions to that rule. You would also have to ensure that you haven't been outside of the UK for more than 450 days in the whole 10-year period, and no more than 90 days in the last year. You'd also want to have to stay here in the UK is another requirement of the indefinite leave application. Thank you, Mrs. Perkins. Please allow me to explain it to our viewer in Urdu, and then I'll get back to you again. Thank you. Mrs. Siddiqui, Assalamu alaikum again, and we are back to you, your question. आपने 10 साल के बेस की एप्लीकेशन की बेस पर एप्लीकेशन करने के लिए जो क्वेश्चन पूछा है कि डिस्क्रिशनरी लीव जो है वो कवर करेगी इस पीरियड को या नहीं. अगर आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिली है तो ये लॉफुल है और ये कवर करेगी. मिसेस पर्किंस का जवाब है कि यस, ये कवर करती है. इट विल बी काउंटेड टुवर्ड्स योर 10 years requisite period of residence in the UK. दूसरा क्वेश्चन जो मैंने उनको खुद ही पूछा कि अगर आप 10 साल की जो एप्लीकेशन करने के लिए इंटेंट कर रहे हैं, इरादा कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स मेन रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी. ऑब्वियसली इन द फर्स्ट प्लेस आपको 10 साल पूरे होंगे करने होंगे. जब आपके 10 साल पूरे कर चुके होंगे आपको लॉफुल इस कंट्री में, तो उसके साथ साथ आपको दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होगी जिनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज और लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है, नॉलेज ऑफ लाइफ एंड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड लाइफ इन द यूके, ये आपको पास करना होगा. क्रिमिनल कन्विक्शन जो है आपकी नहीं होनी चाहिए, और आपके लास्ट जो 1 year है उसमें 90 days से ज़्यादा यूके से एब्सेंस नहीं होनी चाहिए. जो गैप पीरियड्स हैं उनका भी आपको उन्होंने बताया. ये रिक्वायरमेंट्स हैं. जब आप ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर चुके होंगे, टेस्ट डेट पास कर चुके होंगे और 10 साल आपके लॉफुल कंटिन्यूस कंप्लीट हो चुके होंगे, फिर आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं. फॉर्म कौन सा यूज़ होगा, ये मिसेस पर्किंस से हम दोबारा पूछ लेते हैं. मुझे अंदाज़ा है कि आपका ये अगला क्वेश्चन यही होगा. इंस्टेड कि आप एक और ईमेल हमें सेंड करें और हम अगले हफ्ते आपको जवाब दें, हम ये सवाल अभी पूछ लेते हैं. मिसेस पर्किंस, another supplementary question. Mr. Siddiqui, if he intends to make an application on the basis of 10 years continuous residence in the UK, which form does he require to complete for the application? Okay, the form is a set LR, so set in brackets LR for long residence. That would be the application form that they'll need to complete. Thank you. Mr. Siddiqui, जैसा कि आपने सुना अभी उन्होंने आपको फॉर्म भी बता दिया. फॉर्म है set LR. LR is for long residence, set for settlement. तो ये सेटलमेंट के लिए ये लॉन्ग रेजिडेंस का फॉर्म यूज़ होगा. करंट वर्जन यूज़ करिएगा क्योंकि फॉर्म एवरी 2-3 months चेंज होते रहते हैं. तो मेक श्योर यू यूज़ द करंट वर्जन जो कि आपको होम ऑफिस की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना चाहिए. अब हम अगले सवाल की तरफ प्रोसीड करते हैं. अगला क्वेश्चन जो है ये हमें पूछा है मिस्टर सिंह ने. मिस्टर सिंह का इमिग्रेशन हिस्ट्री काफ़ी लंबी चौड़ी है. मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रीफली मिसेस पर्किंस को मैं इमिग्रेशन हिस्ट्री उनके बताऊँ, उनकी सिचुएशन बताऊँ और फिर उनसे सवाल पूछा जाए. बेसिकली मिस्टर सिंह जो हैं ये 2001 में एज अ चाइल्ड आए थे. अंडर 18 होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, आए थे ये यहाँ पे. उसके बाद इनको 2008 में किसी वजह से इनकी कन्विक्शन हुई थी. 12 महीने की इनको सज़ा मिली थी जो इन्होंने पूरी कर चुके हैं. और इन्होंने एक ब्रिटिश नेशनल के साथ शादी की थी. मिस्टर सिंह बताते हैं कि इनकी एक बेटी भी है जो ब्रिटिश नेशनल है. और इस सूरत हाल में इनको 2008 में कन्विक्शन के बाद होम ऑफिस ने डिपोर्टेशन ऑर्डर्स इनके लिए जारी किए थे
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने। लेकिन इनको राइट ऑफ अपील जो मिला था डिपोर्टेशन ऑर्डर के साथ, वो इन कंट्री नहीं था, वो उसी सूरत में एक्सरसाइज हो सकता था जब ये अपने होम कंट्री जो कि इंडिया है, अपने होम कंट्री में जाएं और वहाँ से ये आउटसाइड यूके राइट ऑफ अपील एक्सरसाइज कर सकते थे। इनकी सिचुएशन ये है कि इनका जो डिपोर्टेशन ऑर्डर है वो एक्शन नहीं हुआ और ना ही ये यूके से वापस गए थे, तो इनका आउटस्टैंडिंग डिपोर्टेशन ऑर्डर है। इस दौरान इन्होंने अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप, जो शादी है इनकी, उसकी बेसिस पे एप्लीकेशन की सेट एम की, जो काफ़ी लंबी चली। फिर इनकी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है कि इनके बाद में शादी सेपरेशन हो गई और लेकिन बच्चा इनके साथ है, इनकी बेटी जो है। जी, मिस्टर सिंह का क्वेश्चन ये है कि इन्होंने रिसेंटली 2012 में एक एप्लीकेशन की थी FLRO फॉर्म के ऊपर, जो कि रिफ्यूज़ कर दी गई 2013 में, और इसके साथ उन्होंने कहा कि आपको चूँकि डिपोर्टेशन ऑर्डर हैं आपके ख़िलाफ़ और उनकी बेसिस ये है कि आपको 12 महीने की सज़ा मिली थी, तो इस वजह से वो आपकी कोई भी एप्लीकेशन हम अप्रूव नहीं कर सकते। अभी मिस्टर सिंह जो हैं वो जानना चाह रहे हैं कि वो यूके में लीव टू रिमेन कैसे ले सकते हैं। काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, कोशिश करते हैं मिस्टर पर्किन से इसका सवाल लेने की, इस सवाल का जवाब लेने की। तो मैं अभी बात करूँगा मिस्टर पर्किन से। मिस्टर पर्किन, वी हैव another question and it's for Mr. Singh. Mr. Singh has a complicated, long immigration history. He came to the UK in 2001 as a child. In 2008, he was an adult, obviously, and he was convicted and sentenced for 12 months. Conviction was related to a false document, and he was convicted by the county court. He married a British national. He has a child in the UK who's a British national as well. His first application on the basis of marriage was refused, and subsequently he obtained contact order because he separated from the wife and the child. He obtained a contact order, and the child is living with Mr. Singh. Now, he made an application on the basis of his human rights and contact with the child, but the application was refused because in 2009 he was the Secretary of State issued and signed a deportation order for him. Okay. So under these circumstances, his application for leave to remain was refused, and he was told, I'll quote the wording of the refusal letter which Mr. Singh has sent to us. Your presence in the UK is not conducive to the public good because as a result of your past convictions, you were sentenced for imprisonment for at least 12 months. So now, under these circumstances, Mr. Singh wants to continue living with his child. So, is there any way that he can get leave to remain in the UK and he is not deported from the UK while the deportation order is outstanding? Okay. Yes, he would be able to make an application by way of representations to the Home Office, requesting that they revoke the deportation order that they've actually signed against him in 2009, as you've just noted. This would rely primarily under Article 8, which is the right to family and private life, particularly with the fact that he has a child and he has a contact order for this particular child. In addition to Article 8, there's also a reference to Section 55 of the Borders and Citizenship and Immigration Act, which is where they look at the interests of the child and ensuring that their interests are given a primary consideration. So it is possible to ask for the deportation to be revoked and following on from that, make an application to stay in the UK. Thank you, Mrs. Perkins. I have a supplementary question. The basis on which he can ask for revocation of the deportation order, what would be that basis?
Well, Article 8 would be the basis of the application. We Yes. have Section 55, as I've just mentioned, and we also have the case of Zambrano, which is a case whereby where you have a British child, and if you were to leave the UK, it would affect that child, or that child could no longer stay in the UK, whether to stay, to live, or to study in the UK. You'd be granted status as a result of that. So all of those points would be what would be raised within the representations to the Home Office so that they can revoke the actual deportation order. So it's no longer an issue as it is at the moment. Thank you, Mrs. Perkins. मिस्टर सिंह जी, मैंने आपका सवाल मिसेस पर्किन के सामने रखा, उन्होंने उसका बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया है और मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। जी हाँ, आपके हालात के मुताबिक जो आपकी सिचुएशन है उसमें आप अपनी लीव टू रिमेन के लिए एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये बात दुरुस्त है। तो हमारा जवाब आपके लिए है मुस्बत है, आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन से पहले रिप्रेजेंटेशंस करनी पड़ेंगी, जैसा कि मिसेस पर्किंस ने एक्सप्लेन किया। आपको रिप्रेजेंटेशंस करनी पड़ेंगी कि आपका पहले जो डिपोर्टेशन ऑर्डर है वो रिवोक किया जाए, और वो रिवोक करने के लिए आप आर्टिकल 8 पे रिलाई करेंगे, अपने ह्यूमन राइट्स पे रिलाई करेंगे जो अंडर प्रोटेक्टेड हैं अंडर द ECHR। जब आपका डिपोर्टेशन ऑर्डर जो है वो रिवोक हो जाएगा अंडर योर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, उसके बाद फिर आप लीव टू रिमेन एप्लीकेशन कर सकते हैं जिसकी बेसिस आपके और आपके बच्चे के ह्यूमन राइट्स होंगे, और आप जो ज़ैम्ब्रानो प्रिंसिपल है उसके अंडर भी आप प्रोटेक्टेड हैं। Thank you, Mrs. Perkins, for your advice to our viewers today. We're gonna take a break and then we'll come back. नाज़रीन, हम थोड़ा एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आपके साथ आपके सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप ट्यून रहिएगा। शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इस सेक्शन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी कॉल्स लेना चाहेंगे। मिसेस पर्किंस हमारे साथ हैं, हमारी सीनियर सॉलिसिटर, जो आपको मिस्टर बुखारी के बिहाफ पे आज लीगल एडवाइस के लिए और मशावरत के लिए मालूमात देने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ। तो हम उनको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वेलकम बैक टू द शो मिसेस पर्किंस। Should we take some calls now? Yes, we can do that. अभी हम कॉल्स लेना शुरू करते हैं, तो देखते हैं कौन है लाइन पे हमारे साथ इस वक्त। हेलो 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 Hello. हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर पर्किंस। Good evening. How can I help you? I have a very small 2 questions. Okay. We have applied on FLRO before the law in 2011 and it was refused on the child basis. Then when the law came in after 9 July, our children are over 7 now. Like they are here from more than 7 years now. So we want to apply again. So one of the lawyers told that you need not to apply again on FLRO. You can do further submission. That is Article 353. I need to know that. What is that further submission? 353. And my son is over 18. He is going back to country because he doesn't come under this law. Is there any possibility of him come back here in UK after 1 year or 2 years, because he is going voluntarily on his own decision? You got my question? If I can just recap. So is it that you've made an application that was refused, but now your children are now over the age of 7, and you now believe you qualify under the current immigration rules, and you're wanting to understand whether you should do a fresh application or a fresh claim under paragraph 353 of the immigration rules? Was that the first question? Okay. And what the second point, just to clarify, your relative wants to leave voluntarily. Is that what you're saying? Yeah. Or is it the same person who applied in 2011? Yeah, he applied in 2011 with us, but he doesn't come under the law now. So we are sending. So now my daughter, she's here. She's under 18. She's here more than 7 years. So me, my wife, and my daughter,
we want to apply again on FLRO, but our lawyer said if you apply on FLRO, you have to pay the fees of Home Office. But instead of that, if you apply further submission 353, you need not to pay the fees of Home Office, just the fees of the lawyer only. I need to what is the difference between both of them? Okay. Which one is suitable for us? Further submission 353 or FLRO? Okay. Now, the fresh claim is where you're saying to the Home Office that there's been a new evidence that you're wanting to rely on in support of your application. I would advise, although it's going to be at a cost to you, to make an FLRO application because it's what's relevant as of the date of your application. So as of the date that you're making this FLRO application, you're able to prove that you qualify by virtue of your daughter's 7 years in the UK. With a fresh claim, there's uncertainty. Right now, we're not really getting much of a response from the Home Office in relation to fresh claims, while with actual FLRO applications, we're getting a response and it's been positive where you can clearly prove that you satisfy the criteria. So yes, it will be at an expense to yourself, for yourself and all the dependents, but that would be the preferred route. In relation to your son, who doesn't qualify, leaving voluntarily and at his own expense, which means that he then pays for his ticket, means that he can then come back in after 1 year. Okay, so that is correct information. Okay, would you like to interpret, Khalid? Mr. Perkins, I have a question on this. Yes. Because the first application was made in 2011, Yes. July 12 Yes. rules apply. But the basis of the application was not the basis of the claim now. No, it's not. So is it advisable to make further a fresh claim? A fresh claim, a fresh application. A fresh application. As opposed, yes, a fresh application, yes. Setting out the circumstances, yes. After the child has completed Attained, yes. I think that's already happened from what he's explained. Thank you, Mr. Perkins. Okay. Should we take another call now? Take another call. Hello. 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 Hi. Hello, good evening. Hi. Currently, I'm on Tier 4 visa, student visa, and I'm studying in university, and I'm going to finish my graduation in September next year. Okay. I've got a question that can I move into entrepreneur or graduate entrepreneur after completing my application within the UK? Would you like to go through that? Yeah. The answer would be yes, but would you like to explain? So you want me to take We can break it down, yeah. Can I take your name again? Sorry. Hello. Yeah, my name is Naeem. Naeem. So Naeem, you're going to be a UK graduate in September 14. Yes. And your question is, what other routes are open to you after you have finished your graduation and on this Tier 4 migrant status? Yes. Thank you. Thank you for your question, Mr. Naeem. Once you have completed your degree in the UK as a Tier 4 student migrant, you can switch to other categories. One of the key categories that people people in your situation prefer to switch to is Tier 2, Tier 2 General, which requires that you can switch if you have a UK degree, and for that purpose you will need to have a job offer from a Tier 2 sponsor, who is a licensed Tier 2 employer, and the requirements are that you have a UK degree and you meet the language requirements by way of the degree. You meet the maintenance requirements, and you have a job offer from the employer which is of NQF level 6. This is one option. Another option is Tier 1, the entrepreneur category, which requires that you have a company that you are a director of and you have access to funds of 50,000 UK pounds, and that you are performing and offering services that are of graduate level. And the level can be verified from the
SOC codes document, and it should be of minimum NQF level 4. These are the two easy or more practicable options open for you once you have graduated in the UK. And there is a 200,000 as well. Yes, as well. 200,000 option Yes. is also there. For that, you don't need to rely on your degree. Yes. Is there a requirement for a degree for that No, category? no, No. as far as Thank I'm you. aware. But you don't need to rely on your degree for that. That is 200,000 investment, and of course, language and maintenance requirements still stand. Yes. For, Okay, can we take another call? Thank you. Yeah. Is there another call available? Yes, please. Hello. Hello, good afternoon. Yeah. Hello. My sister got in the discussion leave in 2.5 years, yeah? Yes. In the child base, but her husband is separated, yeah? Can he do in the now is extend for next month, but her husband do the complaint on the immigration, can't extend it because he got his kids, yeah? Can he any information he's updated on the 10-year discussion leave is every 2.5 years? Yeah, maybe should be. Is no way in the discussion leave updated? Okay. Did you get the question? No. Maybe if we can just try and recap. So your sister, you said, has 2.5 years discretionary leave, yes? Yeah. Okay, and this was on the basis of her husband? Her husband is separated, yeah? But he complained on the immigration, you can't extend this one is a girl for the... Hello? Can you hear me? Hello, yeah. Yeah. Can I have your name, please? My name is Sultan. सुल्तान, आप उर्दू में बात कर सकते हैं? Yeah. ओके, आप मुझे बताइएगा सिचुएशन क्या है, फिर मैं मिसेस पर्किंस को आपकी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरी कजिन है, उसकी ना जी एजुकेशन लीव मिली हुई इसको ना? जी ठीक है। क्या नाम है उनका? उसका नाम आमिया है क्या? ठीक है जी। आमिया को 30 मंथ्स की डिस्क्रिशनरी लीव मिली है, तो आपका सवाल क्या है? 2.5 ईयर की मिली थी बेबीज के बेस पे, क्या? ठीक है। 10 ईयर का प्रोसीजर है, क्या? जी। ये वो उसके हस्बैंड ने ना अब उसकी कंप्लेन कर दिया है, वो अपडेट होने वाली है, विजय अपडेट ना हो या ऐसा कुछ हो सकता है कि वो आगे उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। और कंप्लेन क्या की है हस्बैंड ने उनके? भी ये बच्चों के बेस पे अपडेट नहीं होनी चाहिए, मैं इसको रखना नहीं चाहता, ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस बना के भेजी हुई है। मुझे दोबारा बताइएगा कि उनकी जो 30 महीने की जो 2.5 इयर्स की उनकी जो डिस्क्रिशनरी लीव है, उसकी बेसिस क्या थी, किस बेस पे उनको मिली थी ये? बच्चों के बेस 7 डेज का बेबी हो चुका था उसका। ठीक है। और हस्बैंड क्या कंप्लेंट करना चाह रहे हैं उनकी होम ऑफिस से? अभी उसने लेटर डाले हुए हैं ना, तो वो कह रहा है अब मैं तेरी आगे नहीं बढ़ने दूंगा, जैसे प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में। जी जी। तो अब हम लोग वरी है कि उसकी एक्सटेंड होगी या तो फिर तो हस्बैंड क्या कंप्लेंट करेंगे होम ऑफिस से? भी इसको एक्सटेंड नहीं करना, इसकी किस बुनियाद पे? उसकी कोई बुनियाद भी तो होगी ना, शिकायत की, कंप्लेंट की कोई बेसिस होती है? ये नहीं मेरे को पता। नहीं, विदाउट बेसिस तो नहीं वो कर सकते? पता नहीं, अब तो उसने किस बेस पे डाली है हमें तो श्योर नहीं उसने। जी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मिसेस पर्किन से ये सवाल तफसील से उनसे मैं बात कर लेता हूँ और आपको जवाब लेके देते हैं हम। शुक्रिया, आपकी कॉल का शुक्रिया सुल्तान। मिसेस पर्किन, this is a situation where Amia is the applicant. She was granted discretionary leave of 30 months on the basis of apparently she has children in the UK, and she has a husband as well. Now this is as the time for extension is closing. Her husband apparently they don't have a good relationship between them. The husband wants to complain to the UK Home Office, and the caller wasn't sure on what basis he would be complaining against the wife, the applicant. So in this situation, my question would be to assist the caller, what is the basis of extension of the DLR, and secondly, how can husband influence
this situation जो लीव में? I'm assuming that the husband has status in the UK. She didn't say that. Okay, all right. Well, if I leave that to one side. The basis on which she would have been given discretionary leave if she has children would therefore be on the fact that they've established a life here as well as her under private and family life, which is the Article 8 generally. Section 55, which is the Borders and Citizenship and Immigration Act, together with other case law. Now, when you look to apply to extend your stay, the Home Office want to see that the circumstances in which you were initially granted are still prevalent, are still relevant now. So generally, if it is that you've been of good character, that's still been maintained, that you've still got ties and connections in the UK, that's still been maintained, that you're still of good character, your children are still in education and so forth. So it's really a review time frame for the Home Office when they ask for the extension application. Now, if it is that her husband is a reason in which she's been granted status, that was one factor, I would still say that there's a good argument that she can still get an extension based on the children alone. She wouldn't just have to rely on the children and her husband. So I don't think it should have much of a bearing on her case, especially if the children are actually in the UK and they've established a life here. And there's a lot of case law that looks at the interest of children. So that would be a relevant factor. Thank you, Mrs. Perkins. Yeah, okay. सुल्तान अनामिया, आपने मिस्टर पर्किन का जवाब सुन लिया, अंग्रेज़ी में था, आपको बेसिक अंग्रेज़ी तो आती है तो आपको समझ आया होगा। बेसिकली जो उन्होंने की पॉइंट दिया वो यही है कि एक्सटेंशन की बुनियाद होगी आपके सर्कमस्टांसेस का एक रिव्यू। अगर आपके सर्कमस्टांसेस जो बुनियाद थे इस एप्लीकेशन में आपकी ग्रांट ऑफ लीव के, अगर वो अभी भी प्रिवेल करते हैं, अभी भी आपके वही सर्कमस्टांसेस हैं, बच्चे आपके साथ हैं और आप जो हैं वो बेसिस बना रही हैं जिस पे आपको लीव पहले इनिशियल लीव DLR मिली थी, तो अब आपको दोबारा मिल जाएगी। हस्बैंड का इसमें ऐसा रोल नहीं है। आपने ये नहीं एक्सप्लेन किया था कि हस्बैंड का स्टेटस क्या है और वो किस तरह आपकी एप्लीकेशन को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे रिगार्डलेस अगर आपके रिव्यू में सर्कमस्टांसेस वैसे ही नज़र आते हैं, आप साबित कर सकती हैं, एविडेंस देती हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, या आप किसी सोलिसिटर की मदद से आप अच्छी एप्लीकेशन करती हैं, तो हमारा नहीं ख्याल कि आपके हस्बैंड जो हैं आपके स्टेटस की एक्सटेंशन पे असरअंदाज हो सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। हम अगली कॉल की जाने बढ़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, कैन यू हियर मी? जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी, आप कौन बात कर रहे हैं? सिमरा। जी सिमरन, आपका सवाल क्या है? I have a question regarding my husband's application. He came here in 2003, and in 2006 he was going back to Pakistan on a fake passport. So then he was obviously caught, and he had imprisonment for 6 months. Which he served in 2006, and then since then he's been signing on. We got married last year and we made an application, but the solicitor at the time forgot to, or did fail to mention his imprisonment of 6 months in 2006. So the application came back refused this year in March on the basis that he withheld the information, and he's overstayed and he has a criminal conviction and he needs to go back. Now we had a baby girl in June this year. So if you can advise me on what I can do further with this. We changed solicitors, and the new solicitor sent the application off for reconsideration, which came back as refused within a month. But then the solicitor said that we'll just send it off again and just wait and see what happens. But nothing's happened since, so I was just wondering what we can do. Okay. Just to establish some things here as well. So
the 6 months he's already served his sentence. So when it was refused, what was the reasons that they gave for refusing the application? They said one reason was that that they said the application failed to state the conviction, and the other reasons were that he's overstayed and he can't prove ties here and established life here, so he needs to go back. Okay. When you're looking to challenge, thank you very much for your question, by the way. I'll try to give you some information on this. When the Home Office look to refuse your application and they've set out the reasons why, it's important that you find a way to try and refute, try and prove that what the Home Office have said is incorrect. Now, that's not just by what you say, but by also what type of documents you can put forward to corroborate this. Now, the reconsideration that has been made on your behalf, and as you said, had been refused in a month, and your solicitor is advising to send it in again, it's important to know what has actually been put in that reconsideration, okay? What I would advise is that reference to his human rights are clearly cited, because this is covering yourself as a British citizen or someone who's got settled status, together with a daughter who is still quite young. I think she'll be 6 months if she was born in June of this year. But it's really showing why the family life has to be here in the UK as opposed to the family being separated. So showing how you yourself are in the UK, what ties you've established here, whether through education, through your employment, through your family ties, is also going to be a relevant factor, because this case is not just about the human rights that affect your husband, but also the respective rights relating to you and your child individually. So laws and case law relating to your child, your baby, is also a relevant point, because you're not going to want to bring up, your baby without the father there. So these are points that need to be raised within this reconsideration. If there is anything new that hasn't been mentioned before, possibly making a fresh claim may well also be an option open to you under paragraph 353 of the Immigration Act. So where you're either saying that there's new evidence that hasn't been looked at because it wasn't available, or there was information that's been presented that has not been considered by the Home Office, so it's new in their eyes, in a sense. Getting your MP involved is also another option that I would advise, where you can then get the MP to put pressure on the UKBA to hopefully persuade them to make a favourable decision on your husband's case. But it's important that all of the points that have been raised are dealt with. So just to clarify, where the previous solicitor had omitted to mention about the 6 months imprisonment, that would be a situation of explaining, if it is, that it was an innocent mistake, that it wasn't a deliberate attempt to convince the Home Office that he was someone of good character. It was something that he deeply regrets, he's remorseful of, and he's learnt from this mistake, and more importantly, that he hasn't committed any offences since that date. These are all relevant points that it's important are raised within the case. So it's not just about what type of application, but what's actually contained in the application that's going to be an important point. I hope that's helpful for you. Is there another? Would you like to say anything? Should we proceed to another call? Yes. Okay. Do you want to interpret? No, she understands. It was an English-speaking caller. Okay. So, is there another caller? Hello. Thank you. Hello. हेलो Yes, please. जी कौन बात कर रहे हैं? हाँ पाजी मैं गुरशरण सिंह बोल रहा जी जी मिस्टर सिंह शरण सिंह कैसे हैं आप? मैं ठीक है सर जी आपको सवाल पूछना चाह रहे हैं हमसे? हाँ जी सर ये पूछना था हमारे ना हम डिपेंडेंट वीजे पे है जी जी हेलो 2010 से आएंगे हेलो
تو ہم ڈپینڈنٹ ویزے پہ آئے تھے. جی جی, کب آئے تھے آپ ڈپینڈنٹ ویزا پہ؟ 2010 پہ. 2010 میں ایز اسپاؤز آئے تھے آپ؟ جی جی 2011 ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ. 2011 میں آپ نے کون سے ڈپینڈنٹ ویزا پہ آئے تھے؟ جو ہماری وائف نے اسٹوڈنٹ تھی, ہم ڈپینڈنٹ تھے. جی اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ ہے جی. اوکے اب سوال ہاں, وائف کے نا مدر تھوڑے سے انڈیا لے ہو گئے سی, وہ گئے سی ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ. ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਸੀਗਾ. ਪਰ 15 اکتوبر کون سے سال کی؟ 12 ਜੀ 2012. ٹھیک ہے. ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਤੰਬਰ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ. ٹھیک ہے. ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਕਾਲਜ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ. ٹھیک ہے. ਕਾਲਜ ਜੀ ਦਾ. ٹھیک ہے. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ٹھیک ہے. ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਜੀ ਜੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਅਸੀਂ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ. ਜੀ ਜੀ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਈ. ਜੀ ਜੀ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫਿਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਹੋਰ ਕਾਲਜ 'ਚ. ਠੀਕ ਹੈ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵਾਈਫ ਦੋਨਾਂ ਦਾ. ٹھیک ہے. تو ہیلو مسٹر سنگھ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. مسٹر سنگھ, آپ کا سوال تو ہمیں نہیں مل سکا ابھی تک. آپ نے جو امیگریشن ہسٹری اپنی بتائی ہے اس میں صرف اتنا ہی پتہ چل سکا کہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں ایک Tier 4 اسٹوڈنٹ مائیگرنٹ کے جس کا ویزا ایکسپائر ہوا اور اس کے بعد کالج بند ہونے کی وجہ سے ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے کرٹیل اپیرنٹلی ہو گیا تھا. تو اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں. اب آپ ایسا کریں, آپ یہی سوال ہمیں ای میل میں آپ ہمیں لکھ کے بھیج دیں, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کا سوال اگلے ہفتے میں لے لیں گے اور اس کا جواب مسز پرکنس سے ہم لے کے آپ تک پہنچائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. آپ کے ہمیں سوال کا انتظار رہے گا. ناظرین, آپ کا شکریہ, آپ کے ٹائم کا. آپ نے ہمیں مجھے ابھی پتہ چل رہا تھا کہ بہت سے کالرز ابھی کیو میں ہیں جن کو ہم نے ایڈوائس کے لیے ابھی ٹائم دینا تھا, لیکن جیسا کہ مسٹر بخاری کے شو میں ہوتا ہے یوزلی کہ کالز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور اس دفعہ بھی مسٹر بخاری کی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے. مسٹر بخاری دوسری جگہ پہ اب اسی لیگل ورک میں مصروف ہیں, تو ہم سارے کالز تو نہیں لے سکے, لیکن ہمارے پاس ای میلز کا جو آپشن ہے وہ جاری رہے گا. ہم آپ چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنے سوال جو کالرز مس ہو گئے ہیں وہ اپنے سوال ای میل پہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں. اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ ان کے سوال شامل کریں گے پہلے, اور کالز ہم بعد میں لیں گے جس طرح ہم نے اس ہفتے کیا. مسٹر بخاری کی طرف سے آپ لوگوں کو ریگارڈز, اور آپ کی جو ای میلز آتی ہیں وہ ہم مسٹر بخاری کو فارورڈ کرتے ہیں, اور آپ کی ای میلز ان کی ان پٹ کے بعد ہی آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے ہمارے پاس واپس آئیں گی, اور اگلے ہفتے ہم آپ سے ملاقات کریں گے تو ہم آپ کو ان سوالوں کے جواب بھی دیں گے. آج کے شو میں مسز بیلی پرکنس ہماری لیگل ایکسپرٹ تھی, ہم آپ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مسز پرکنس, thank you so much for your time today and for your expert legal advice to our viewers. I thank you on behalf of the viewers and on behalf of Mr. Bukhari as well. Thank you so much. شکریہ ناظرین. اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کے نئے سوالوں کے ساتھ اور ہمارے جواب اور آپ کی رہنمائی کے لیے. شکریہ. خدا حافظ. Bye bye.